Hi students, how are you? I hope everybody is very well. Today I'll teach you one of the most important issue of shares. Company accounts issue of shares. तो बहुत स्टूडेंट लोग इशू ऑफ शेयर्स नॉर्मली हम देखा ड्यूरिंग माय 30 years टीचिंग इन अकाउंट्स इन दिस सब्जेक्ट्स. तो हम आप लोग को सिखाएंगे. आप लोग को कोई डरने का जरूरत नहीं. इशू ऑफ शेयर्स इज वेरी इजी चैप्टर. इफ यू फॉलो माय वीडियोस, a series of videos. Okay, so the chapter name is company account issue of shares. So what is shares? The share is total capital of the company is divided into units of small denominations. Such small denominational unit is called shares. And what is share capital? Share capital means the capital raised by a company by the issue of shares. Suppose company total capital raise करना चाहता है 10 lakhs and it is divided by 1 lakh units at the rate of rupees 10 units per share. This unit of rupees 10 is called 1 shares value. So share is nothing but a small unit to raise the capital. Now, types of shares. There are two types of shares. One is the preference shares, another is equity shares. Preference shares and equity shares. Preference shares get the full preference, to be given the full preference whenever the company gets liquidated. Their capital to be refunded first, and after that, if there is any money, it will be given to the equity shareholders. Therefore equity shareholder has some risk. But the preference shares will get a fixed rate of dividend. But the equity shareholder लोग अगर कंपनी का कुछ प्रॉफिट होगा, after giving all profit to the equity shareholders, then if preference shareholders, then only equity shareholder will give their dividend. Okay, since equity share is very risky, therefore they also, in case of a huge profits, they will get the most benefit. They will get the maximum amount of dividend. Okay, today I'll discuss now what is the types of shares. There are two types of shares. I'm बोल दिया. Now there is a kinds of share capital. Kinds of share capital. Today I'll discuss. In this chapter I will cover all of these portion of the shares. If I complete all of these, this chapter will be completely over. Now, kinds of share capital. Authorized capital. Authorized capital जिसको बोलता है registered capital, उसका और एक नाम nominal capital. So what is authorized capital? The authorized capital means government gives the authority to the company that this is the maximum amount of capital you can raise from the public. Its name is also called registered capital, because at the time of registration this amount of capital is stated in the memorandum of association, and its another name is nominal capital. So everything is same: authorized capital, registered capital and nominal capital. Suppose total capital of the firm, government has given the authority to the company that maximum you can raise from the public is 10 lakhs. 10 lakhs. 10 lakhs. Rupees 10 lakhs. At the rate of 10 per share. That is 1 lakh shares. 1 lakh shares. 1 lakh shares. This is the maximum capital you can raise from the public. So company, as per their requirement, sometimes they may not issue this total 1 lakh shares.
कंपनी को सपोज जरूरत है अभी 8 लाख रुपया, तो 8 लाख के लिए कंपनी 80,000 शेयर्स इशू करेंगे एंड 10 रुपीज करके, तो 80,000 इंटू 10 is 8 lakhs is the issued capital. So issued capital is 8 lakhs. It will never be more than the authorized capital. Issued capital will never be more than authorized capital. So it is 8 lakhs or it may be 10 lakhs. Now for the time being, company requires only 8 lakhs of rupees. So 8 lakh is the issued capital. However, public may not subscribe or may not buy all the shares. In that case, suppose public subscribed or public has bought only 7,70,000 shares. At the rate of 10. So total capital is 7 lakhs. This portion I will discuss later whenever I will show you the balance sheet preparations, because whenever question asked to prepare a balance sheet, so in the balance sheet I have to show all these authorized capital, what is issued capital, what is subscribed capital, everything we have to give. Okay, so in the whenever we will teach you the balance sheet for purpose of the share, equity shares, then I will show this proportion of this portion separately. Now the topics, what will be covered in this chapter. I'll show you series. This is a series 1 out of 12. In this chapter 1 out of this 12, in this chapter I will give you upload the video, 12 videos and 12 sums, maybe more than 12 sums, 13, 14 it may be. But these 12 sums, this is a very much comprehensive sums. All this sum is created by me, and this sum is actually हम बनाया for last 20 years के जो CBSE ISC का सम आया था उसका बेस करके, एंड बीकॉम ऑनर्स का जो सम्स है उसका ऊपर बेस करके ये सब सम्स हम बना के रखा. तो दिस सम्स इफ आई शो यू दिस 12 comprehensive sums, and then it will cover, guarantee that it will cover full syllabus of this issue of the shares companies. Okay, so only 12 sums करने से आपको हो जाएगा. तो 12 sum हम बाद में कराएंगे, because accounts is a practical thing. So I will show the practical problems and solutions mainly, but the thing is that I will cover here, I will cover completely in this topic what is calls in area. Calls in area सिखाएंगे. Calls in area means कोई भी पार्टनर, कोई भी शेयर होल्डर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, सपोज 3 इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा देने के लिए बोला, कोई भी शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मनी, देन इसको बोलता है कॉल्स इन एरियर. एंड कॉल्स इन एडवांस, इफ एनी शेयर होल्डर पेड their final call money in advance along with the allotment, it is called calls in advance. Okay, interest on calls in area and interest on calls in advance also I will cover in this chapter. It is interest on calls in area as per the table F, it is 10% per annum, and interest on calls in advance it will be 12% per annum. Actually company जिसका कॉल्स इन एडवांस देता है उसको थोड़ा सा एनकरेज करने के लिए 2% एक्स्ट्रा दे देता है, और जब जो फेल किया था कॉल्स इन एरिया उसके लिए 2% कम लेता है, 10% एंड 12%. इसको याद रखने के लिए एक तरीका. तो नाउ ओवर सब्सक्रिप्शन, आई विल कवर आल्सो ओवर सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? दैट इज कंपनी आई हैव इशूड 10,000 शेयर्स, बट कंपनी का पब्लिक से 12,000 का शेयर्स, 12,000 का पैसा हमको मिल गया. So 2,000 is extra, and this. Okay. So what is over subscription? Over subscription means extra subscription हो गया. Company has offered 10,000 shares, but public has subscribed or bought 12,000 shares, more than
the shares what the company has actually issued. That is 12,000 shares का मिल गया. The 2,000 is over subscription of shares. And what is under subscription? Under subscription means कंपनी 10,000 के लिए ऑफर किया था, लेकिन पब्लिक इतना शेयर खरीदा नहीं है, तो दिस 2,000 सपोज 10,000 के लिए ऑफर किया था, पब्लिक सब्सक्रिप्शन आया ओनली 8,000 शेयर्स, तो 2,000 शेयर्स का कम सब्सक्रिप्शन हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ओके, नाउ forfeiture of equity shares. Forfeiture of equity shares, I will discuss. Forfeiture of equity shares. What is forfeiture of equity shares? Suppose इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए because in this chapter I will cover all of this portion of the shares. Okay, because we have to cover all the points in these chapters. Okay, now तो what is forfeiture of shares? Forfeiture of equity share means कोई भी शेयर होल्डर फेल किया, अलॉटमेंट फेल किया और फाइनल कॉल फेल किया, कंपनी डिसाइड किया तो हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड किया जो ये लोग को जो शेयर फेल किया था ये लोग को लेटर दे जाए, तुमको और शेयर नहीं मिलेगा, तुम्हारा शेयर का पैसा फॉरफिट कर रहा है. इसका मतलब है तुम्हारा पैसा कंपनी जितना मिला था वो कंपनी और रिफंड नहीं करेंगे, अब तुम्हारा जो शेयर है वो शेयर का मालिक और तुम नहीं रहेंगे. एंड दैट मीन्स द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. वो लोग जितना भी शेयर इशू किया था खरीदा था, एक भी शेयर उसको नहीं मिलेगा, उसका मालिक कंपनी का रिटर्न बैक आ गया तो कंपनी और किसी को सेल कर देगा बाद में चाहिएगा तो. ओके, तो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. आई हैव टू डिस्कस रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज जिसका शेयर फॉरफिटेड हो गया तो वो शेयर कंपनी का हाथ में रखे तो नहीं है, कंपनी का चाहिए टोटल कैपिटल को रेज करना चाहिए, इसलिए कंपनी वो सब शेयर्स को रीइश्यू कर देता है, कोई और किसी को एट ए डिस्काउंट भी इशू कर सकता है, एट ए प्रीमियम भी रीइश्यू कर सकता है. ठीक है, उसका बाद में जब सम करेंगे प्रॉपर्ली आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. थ्योरी थोड़ा बहुत हमको पता चल रहा है, जस्ट थोड़ा बहुत तुम लोग को प्रॉब्लम समझने प्रॉब्लम हो सकता है, बट व्हेनेवर आई विल डू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस it will be fully clear. Okay, now reissue of equity shares, issue of shares at a discount or at par or at a premium. Issue of shares at a discount और मतलब कंपनी का शेयर सपोज शेयर का नॉमिनल वैल्यू इज 10, अगर इससे कम में 20% डिस्काउंट में सेल कर दिया तो इसका हो जाएगा 8 रुपया. एक शेयर का इशू हो रहा है 8 रुपया. दो एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी जब शेयर लॉन्च करता है, न्यू शेयर इशू करता है, वो कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता है, इट विल बी वॉइड कंप्लीटली. ओके, सो अभी जो पहले होता था इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, 7-8 साल पहले हम देखता था जब साम करता था इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट, बहुत साल ISC एग्जाम में CBSE एग्जाम में आया था, बट प्रेजेंटली इट इज नॉट अलाउड बाय द कंपनी. सो इशू ऑफ शेयर्स एट ए डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स मोर देन दिस 20% प्रीमियम. प्रीमियम जब होता है, जब शेयर्स एट ए प्रीमियम, जब प्रीमियम होता है 20% प्रीमियम, तब तो एक्स्ट्रा में सेल हो जाएगा, दैट इज 12 रुपीज. तो 10 रुपया में शेयर इशू होगा, इट इज कॉल्ड एट पार. 10 इज द शेयर का फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से कम में इशू करेंगे इसको बोलता है क्या, डिस्काउंट. तो डिस्काउंट में इशू किया 8 रुपया, और जब ज्यादा में सेल कर दिया उसको बोलता है ऑब्वियसली प्रीमियम. कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ऑब्वियसली जब बोरो बहुत हाई होता है, सब कंपनी शेयर ज्यादा में सेल करता है, उसको बोलता है इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम. बाद में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस पॉइंट. इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इसका मतलब है अदर देन कैश का मतलब है कोई कंपनी दूसरा कंपनी का एसेट खरीद लिया, सपोज रिलायंस लिमिटेड कोई दूसरा कंपनी का एसेट्स खरीद लिया, इसके लिए बहुत एसेट्स चाहिए, सपोज फैक्ट्री बनाने के लिए जितना एसेट्स खरीदा था, सपोज कंपनी एसेट्स खरीदने से क्या होता है, कंपनी को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा जिससे हम एसेट खरीदा, उसको पैसा का जगह में रिलायंस कंपनी क्या कर दिया, उसको शेयर दे दिया, बोला मेरा कंपनी का शेयर ले लीजिए, आपको पैसा नहीं दे रहे. तो कंपनी अगर एग्री होगा ठीक है शेयर दे दीजिए, तो इसको बोलता है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. मतलब कैश में
शेयर इशू किया, हमको कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, वही जिससे शेयर हम एसेट खरीदा था उसको हम कंपनी का शेयर दे देगा, ठीक है। रिलायंस कंपनी को कोई कैश नहीं मिल रहा है, चेक नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको एसेट तो मिल गया, एसेट्स का अगेंस्ट में कैश देने का जगह में शेयर दे दिया, एंड इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ओके, हम सम कराएंगे प्रॉपर्ली, दो सम इसका ऊपर कराएंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, वेरी इजी, टू सम सफिशिएंट फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश समझाने के लिए। एंड सम जो आएगा, जो नॉर्मली इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन डिवेंचर ज्यादा आता है, बाई चांस आएगा तो इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ओके, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, रिगार्डिंग द प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब प्रोराटा का चैप्टर्स कराएंगे शेयर का, वेरी इजी, ओनली 10% ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोराटा। सब लोग डरता है, क्यों डरता है पता नहीं चला, जस्ट हम जब प्रोराटा कराएंगे आप जरूर ध्यान से सुनेंगे, वेरी इजी, जस्ट इट विल बी सॉल्व विद इन फिंगर टिप्स। ओके, नाउ कंपनीज बैलेंस शीट हमको देखना पड़ेगा। कंपनी क्या करता है, एग्जाम में सम आता है, दे आस्क्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कंपनीज बैलेंस शीट। तो कंपनीज बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हमको हम शेयर का पोर्शन ओनली, तो शेयर का कंपनीज बैलेंस शीट पोर्शन भी हम कवर करेंगे, दिखाएंगे। इट इज ऑल्सो वेरी इजी, हम कॉम्प्रिहेंसिव एक तो बैलेंस शीट, एक तो साम बना के देगा, उसका एक ही बैलेंस शीट सफिशिएंट हो जाएगा फॉर कोई भी साम के लिए, ज्यादा मेरा जितना साम भी होगा एक बैलेंस शीट दिखा देंगे, टफ साम दिखा के, एक तो इजी साम भी देगा, तो सेकंड सम ऑब्वियसली टू कॉम्प्रिहेंसिव टफ सम देगा। नाउ कैश बुक कभी कभी सम करने के लिए बोलता है प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, इन दैट एट दैट टाइम हमको कैश बुक भी करना पड़ेगा एंड जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा। जब हाउएवर कैश बुक जब बोलता है ऑल बैंक एंट्रीज विल गो टू द कैश बुक, जब कैश बुक बोलता है तब ऑल बैंक एंट्रीज विल पास इन द कैश बुक एंड अदर देन द बैंक एंट्रीज एवरीथिंग विल गो टू द जर्नल एंट्रीज। कोई स्टूडेंट बोलता है सर हम पहले जर्नल कर लेगा फिर बाद में कैश बुक कर लेगा, नहीं, इसमें मार्क्स थोड़ा से काट सकता है, बिकॉज कैश बुक इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन जब होता है हम लोग डायरेक्टली कैश बुक में पास करता है और बाकी एंट्री हम लोग जर्नल में पास कर लेंगे। ओके, उसका भी समझाएंगे। और लेजर अकाउंट कभी कभी रिसेंटली देखता है 2-3 साल से कंपनी ISC का देखा, CBSE का देखा, जो बोलता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज and calls in arrear account, ledger account, and calls in advance account. So I'll discuss all of these portion of this chapter full. This will cover company's issue of shares and हम ऐसे भी गारंटी देता है कि I will special emphasize on this chapter comprehensive problems and solutions. All comprehensive problems हम खुद बना के हम देख रहे हैं, ऐसे बनाया so that it will minimum number of sums I will show you 12 से 13 sums and it will cover full 100 sums का बराबर है। तो प्लीज हमको फॉलो करेंगे, हमारा ऑल वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे, आप लोग को मजा भी आएगा। एंड इसका बाद अगर कोई भी डिफिकल्ट सम्स किसी का पास होगा शेयर का बारे में हमको दे सकता है, हम बाद में सॉल्यूशन भी कर देगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में जाता है, हम लोग एक तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स बिगिनिंग सम्स करता है। फर्स्ट सम विल बी वेरी बेसिक सम्स, थोड़ा सा टफ सम देगा क्योंकि एकदम बेसिक सम देके कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा सा बेसिक सम देंगे। सेकंड सम से हम एक्सेलेरेट करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। हम आ रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर ही हम दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग अभी स्टार्ट करता है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। पहले हम बोला था accounts is based on the practical things, so I will emphasize on the comprehensive problems and solutions of the different kinds of sums। and हम लोग क्या सम में क्या कवर करेंगे सब चीज पहले बोल दिया था, तो let us start the sum। this is the first sum of the series out of 12। तो फर्स्ट सम तुम लोग लिख लीजिए एक बार। आकाश लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares at the rate of ₹10 per share payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment and balance on final call। 10 रुपया का शेयर, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट एंड 2 रुपया फाइनल कॉल में देने के लिए बोलेगा। बैलेंस मीन्स 2 rupees on final call। Now, company received the application of 12,000 shares
हम पहले से लिख दिया 12,000 shares and excess shares are immediately refunded. This is over subscription basically. हम बोला था पहले over subscription 10,000 इशू किया था, लेकिन 12,000 शेयर के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन आ गया. So company has immediately refunded 2,000 shares. Okay. Now company received all the money up to final call, except one shareholder, Ayushman, holding 1,000 shares at the 1,000 shares failed to pay the final call money. सब लिखा है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा. Failed to pay the final call money and his shares are immediately forfeited by the company after the board meeting. उसको नोटिस भी दे दिया आयुष्मान को, जो आपका पूरा आप फेल किया था फाइनल कॉल, सो कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट योर शेयर्स. तो फॉरफिचर मीन्स कंपनी उसको जो शेयर दिया था उसको शेयर नहीं मिलेगा, एंड वो जो पैसा भी दे दिया था, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मनी दिया था, उसको और रिफंड नहीं मिलेगा. तो दिस इज कॉल्ड फॉरफिचर. तो कंपनी उसको फॉरफिट कर दिया. करने का बाद एक और किसी को 1,000 शेयर होल्डर, जो कंपनी का जो फॉरफिचर का बाद शेयर आ गया, दिस कंपनी रीइश्यूड all the 1,000 shares, basically all the 1,000 forfeited shares, all the 1,000 forfeited share at a discount of 10%, fully paid up. Show journal entries. कंपनी आयुष्मान जो फेल किया था उसका शेयर और किसी को 10% डिस्काउंट में सेल कर दिया. मतलब 10 का शेयर 10% डिस्काउंट मीन्स 1 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट मीन्स 9 रुपया में सेल कर दिया. एंड कंपनी विल नॉट माइंड टू रीइश्यू दिस शेयर्स एट ए डिस्काउंट because company has already huge profit by forfeiting these shares. कितना प्रॉफिट हुआ था? 8 रुपया प्रॉफिट हुआ था. कैसे? आयुष्मान हैज एक्चुअली पेड 1,000 शेयर्स का शेयर एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, दैट इज 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट. 8 रुपया देने का बाद उसका शेयर फॉरफिट हो गया. बेचारा का बहुत खराब है. तो इतना पैसा देने के बाद उसको पैसा नहीं फॉरफिट कर दिया. एनीवे, तो हमको करना ही पड़ेगा, एंड कंपनी इसको फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिया किसी को. चलो हम लोग सम का सॉल्यूशन करता है, बाद में डिस्कशन करेंगे हाउ टू सॉल्व दिस सम. एक बार हम सम दिखाता है. दिस इज अ बेसिक सम, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट सम आने वाला है और भी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी टफ सम, not very tough sums, मोटामोटी टफ सम होगा, but I am confident that next sum will cover 50% of this chapter. So follow the next sum obviously after this basic sum. Okay, so let's start the solutions. So journal entries, we have to show the journal entries format. तो यहाँ पे लिखेगा पहले in the books of आकाश. तो आकाश लिमिटेड, AAKASH, आकाश लिमिटेड journal, journal. Okay. Debit, credit, and ledger folio. Date. So this is date. Particulars. पूरा ledger folio, debit, credit, rupees.
रुपीज। ओके, तो साम था आकाश लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। तो एक्चुअली कंपनी को 12,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्रीज? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स? कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट, कोई भी एप्लीकेशन मनी मिला, द जर्नल एंट्रीज इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फाइनल कॉल मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। दिस इज द जर्नल्स। व्हाट इज एप्लीकेशन? व्हाट इज अलॉटमेंट? What is final call? This is nothing but installment payment of this 10 rupees in different part. First part is obviously name is application. Second part always is allotment. बाद में second, third part, first call, fourth part, and that is the final call. So in each installment I have to pay the different amount. So bank account debit क्यों? Because whenever I receive the amount, bank balance will increase. So bank balance will increase मतलब always bank account will be debited. Okay? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर का पैसा आया था? 12,000 का। 12,000 शेयर्स इंटू 3 रुपये एप्लीकेशन में मिला। कितना करके था मेरा? 3 + 5 + 2 इक्वल टू मोर टोटल रुपीज 10 रुपीज। आउट ऑफ द 10 रुपीज, 3 is on application, 5 on allotment and 2 on final call। तो 12,000 इंटू 3 एप्लीकेशन आपको मिला 36,000। Being application money received, being application money received, being application money received। तुम लोग लिख सकता है 12,000 शेयर्स at the rate of 10, at the rate of 3 received, being application money received। Okay, next, out of these 12,000, company cannot accept more than 10,000 shares, so it will be 10,000 shares or 2,000 shares amount will be refunded। So amount of 2,000 will be refunded, opposite entry to be passed। The amount is received bank to share application for refund, exactly opposite entry share application account debit to bank। और जितना पैसा रिफंड नहीं कर रहा है पूरा पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, बिकॉज कंपनी शेयर इशू किया था वो कैपिटल में जाने के लिए ही, सो बाकी पैसा कैपिटल में चला जाएगा। तो जर्नल इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कैपिटल ए लिखने से बेटर होता है, अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा एक्स्ट्रा मिल गया उसके ऊपर रिफंड कर देता है बैंक अकाउंट। कितना रिफंड कर देंगे? 2,000 शेयर्स, जितना पैसा एक्स्ट्रा मिला था इंटू 10 3 करके मिला तो ऑब्वियसली 6,000 रुपया रिफंड कर देता है। और शेयर एप्लीकेशन में प्लीज फॉलो द प्रोसीड्योर व्हाट आई फॉलोज द अमाउंट ऑल्सो इन दिस वे, आप लोग भी लिख लेंगे। ओके, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा? 36,000 क्रेडिट था तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि 36,000 जो एप्लीकेशन मनी मिला था वो पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगा? मैक्सिमम 30,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इसलिए 2,000 हम लोग रिफंड कर देगा। तो 2,000 रिफंड कर दिया, बाकी 30,000 पहले लिख लेता है। 30,000 कितना है? 30,000 कहां पे चला जाएगा? टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना था 30,000, इक्विटी शेयर क्रेडिट था कितना 30 और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली वही बचा। तो लेकिन इसलिए क्या कर दिया शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, हम लोग लिख दिया जो टू शेयर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों हुआ, कैपिटल अकाउंट इज द लायबिलिटीज एंड वी नो इन अकाउंटेंसी जो all liabilities are to be credited. If liability is increased, we know it is to be credited. If liability is decreased, it is to be debited. Okay? So capital account बढ़ गया बिजनेस का, liabilities इक्विटी शेयर कैपिटल इसलिए क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल कैंसिल होगा तब डेबिट कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री being application money transferred to equity share capital account and excess amount is refunded. Okay, now third entry share allotment का मानी अभी allotment का भी दो एंट्री होगा, फाइनल कॉल का भी दो एंट्री होगा। allotment का मानी कंपनी जब एप्लीकेशन मनी मिला था, कंपनी क्या करता है अलॉट करता है, कंपनी अलॉट करता है। अलॉट मतलब जिसके उसको शेयर मिलेगा उसको दे देगा, यू आर अलॉटेड। ओके, सो हमको अलॉटमेंट मनी मिलेगा, तो अलॉटमेंट का मनी मिलने का पहले ही हम लोग वो लोग को लेटर दे देता है जो तुम लोग को प्लीज पे योर अलॉटमेंट मनी। तो इसलिए अलॉटमेंट मनी ड्यू जब आ जाता है तो लोग को सबके पास लेटर चला जाता है अलॉटमेंट मनी के लिए। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है इसका लिए जर्नल एंट्रीज शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital, equity share capital account। एप्लीकेशन मैंने जब ट्रांसफर किया था कैपिटल में, हम लोग जर्नल किया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करेंगे हम लोग लिखते हैं शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 10,000 शेयर 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 था, तो 5 रुपया करके 50,000 विल बी देयर, यहाँ पे भी 50,000। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब यहाँ पे नहीं लिख रहा है। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिख देगा। नेक्स्ट हमको अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी अभी रिसीव होगा, जो अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड तब अगेन बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। The journal is bank account debit to equity share capital account, equity share allotment account, allotment money receipt, equity share allotment account। एक मिनट में कोई फेल नहीं किया था, ठीक है, दिस इज फुल्ली राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 10,000 इंटू पास सेम अमाउंट आई हैव रिसीव्ड बिकॉज नोबडी हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अलॉटमेंट का बाद अभी आ रहा है व्हाट इज दैट, अलॉटमेंट के बाद आता है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल मनी ड्यू, व्हाट इज द जर्नल, फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फाइनल कॉल मनी जब ड्यू होता है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज अलॉटमेंट मनी जब ड्यू था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फाइनल कॉल मनी ड्यू तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल ऑब्वियसली इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? पूरा फुल अमाउंट 50,000 रुपया। सॉरी, फाइनल कॉल में इट वॉज 2, दैट इज 20,000 रुपीज। इट इज 20,000 रुपीज। नाउ फाइनल कॉल मनी जब रिसीव हो रहा था, वन शेयर होल्डर 1,000 शेयर लिया था, उसको फेल कर दिया, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, उसको कॉल्स इन एरियर बोलता है। कोई भी शेयर होल्डर फेल किया उसको बोलता है कॉल्स इन एरियर, मतलब कॉल किया उसको पैसा दे नहीं पाया, इसलिए मेरा बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। तो हाउ, जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, इसलिए जर्नल है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में हम लोग पहले 20,000 ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि हमको पूरा फाइनल कॉल में 20,000 मिलना है। लेकिन एक आदमी 1,000 शेयर लिया था, कितना? 1,000 शेयर लिया था, उसको 2 रुपया करके फाइनल कॉल में देना था, वो फेल किया था, तो मतलब 2,000 इज फेल्ड। So जब 20,000 में 2,000 failed, obviously 18,000 is received by the company. Okay? Now हम इसको हम लोग बेसिक सम जो होता है तो फाइनल कल तक कंप्लीट हो गया। नाउ द फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर मीन्स कैंसिलेशन। फॉरफीचर means cancellation. Means profit of a company. It is a profit of a company. कंपनी का प्रॉफिट हो गया। फॉरफीचर मीन्स उसका शेयर कैंसिल कर दिया, और वो आयुष्मान जो 1000 शेयर लिया था उसको लिए जो पैसा दिया था वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। कंपनी विल नॉट रिफंड दिस 8,000 रुपीज। 1,000 इंटू 8 रुपया जो आयुष्मान लिमिटेड दिया था उसको पैसा, और कंपनी उसको वापस नहीं करेगा, कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो फॉरफीचर मीन्स कैंसिलेशन। नाउ कैंसिलेशन एंट्री हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग कैंसिलेशन एंट्री पास करता है। तो व्हाट इज द कैंसिलेशन एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल पहले हम लोग क्रेडिट किया था, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट हुआ था, टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पहले डेबिट था, पहले कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट था, तो अभी 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज पहले बोला था कैंसिलेशन, सब एंट्री कैंसिल कर दो, एंड जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। फॉरफीचर अकाउंट मतलब कंपनी का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,000 इंटू 8। तो कैसे होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना लिखेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपी तो पूरा पहले सब लोग ही लिख सकता है, पूरा रट्टा मार के,
लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। इस पे सब लोग लिख ले, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into face value of shares up to call made. So after which call it is forfeited? Number of shares forfeited is 1000 into after which call it is forfeited, it is after final call. तो final call तक face value कितना, 3 plus 5 plus 2 that is 10,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट था, अभी डेबिट हो गया। अगर फॉरफिट होता था आफ्टर द अलॉटमेंट, तब 1000 शेयर्स इनटू अप टू फाइनल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक 3 plus 5 8 रुपीज होता था। इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, तो हमको होता था 1000 into 8। सिंस इट इज आफ्टर फाइनल कॉल एंड फाइनल कॉल तक पूरा फेस वैल्यू 10, इसलिए हम लोग 10 लिख दिया। नाउ 2 कॉल्स इन एरियर। इसका बाद हम नेक्स्ट टाइम जब देंगे, 2 आदमी को फॉरफिट कराएंगे। एक आदमी अलॉटमेंट में फेल किया एंड फॉरफिट कर दिया, एंड और एक आदमी फाइनल कॉल में, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल दोनों ही दिया नहीं, तो उसको फॉरफिट कर देगा आफ्टर फाइनल कॉल, वो अलग से देगा। दैट विल बी ए वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव सम, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट उस सम में जो ठीक से करेंगे, उसका 50% ऑफ द चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ द 2 कॉल्स इन एरिया। 2 कॉल्स इन एरिया में कितना जाएगा, जितना कॉल्स इन एरिया डेबिट था उस आदमी का, दैट विल बी क्रेडिटेड। उस आदमी फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरिया था 1000 रुपया पहला जाना था, तो 1000 रुपया का जो कॉल्स इन एरिया था, तो दैट इज 1000 into 2 था फाइनल कॉल, दैट इज 2000 रुपीज। ऐसे भी चेकिंग करने के लिए भी लिख सकता है 1000 करके वो 2 रुपया कॉल्स इन एरिया था, तो दैट 2000 ऑल्सो वी कैन राइट। बट हम लोग लिखता है कॉल्स इन एरिया, उसका जितना डेबिट था उसका पूरा ही क्रेडिट कर देता है, दैट इज मच फास्टर। ओके, एंड बैलेंसिंग फिगर 10,000 माइनस 8,000 2000, 8,000 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो गया। दैट इज फॉरफिचर अकाउंट। प्रॉफिट मीन्स ऑलवेज क्रेडिट, फॉरफिचर मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट ही है। तो 8,000 नाउ हमको चेक करके देखना पड़ेगा whether this 8,000 is correct or wrong, because 10,000 minus 2,000 बैलेंसिंग फिगर करके 8,000 अगर कर लेगा तो कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम भी हो सकता है बाद में जब डिफिकल्ट सम्स आएगा। इसलिए हमको ऑल रेस्पेक्ट में चेक करके देखना पड़ेगा 8,000 करेक्ट है कि 2,000 करेक्ट है कि 10,000 भी करेक्ट है कि। ईच प्लेसेस में अगर हम लोग चेक करेंगे तब क्या होता है, तुम लोग को सुविधा भी हो जाएगा, जो ओके वी हैव चेक्ड और सम इज फुल्ली राइट। ठीक है, तो चेकिंग सिस्टम, चेक, इसको हम चेक करता है। कैसे चेक करेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। उस आदमी से एक्चुअली कितना पैसा मिला था, दैट इज 1000 शेयर्स। कितना, उस आदमी का 1000 शेयर्स था, उस आदमी से एप्लीकेशन मनी मिला एंड अलॉटमेंट मनी मिला। तो एप्लीकेशन में 3 और अलॉटमेंट में 5, तो 8 रुपया मिला, तो 8,000 हो गया, एंड दैट इज चेक्ड इक्वल टू 8,000 चेक्ड। सो वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोग जो सम किया इट इज फुल्ली राइट। ठीक है, आफ्टर द फॉरफिचर कंपनी उसी शेयर होल्डर को रीइश्यू कर देता है और किसी को, उसको बोल देता है पूरा तुम्हारा 1000 शेयर कंपनी का पास है, तुम लोग ले लो। जनरली एम्प्लॉय को बोलता है, नहीं तो और किसी को बोल देता है, जैसे 1000 शेयर सस्ता में सेल कर देता है, क्योंकि कंपनी का पूरा शेयर ही सेल होना चाहिए, तो इसलिए उसको रख के फायदा नहीं है, सेल कर देता है। इसको बोलता है रीइश्यू, एंड कंपनी रीइश्यू नॉर्मली दिस शेयर्स एट ए डिस्काउंट एंड कंपनी ओन माइंड, एंड लेकिन सबको बोल देता है एक साथ में पूरा पैसा देना पड़ेगा, एंड कंपनी ओन माइंड टू रीसेल द शेयर्स एट ए डिस्काउंट और एट ए लॉस, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी उसी शेयर से 8,000 रुपया प्रॉफिट है,
सो कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट में रीइश्यू कर सकता है दिस 1000 शेयर्स? मैक्सिमम 8000 रुपीज डिस्काउंट में कंपनी कैन रीइश्यू दिस 1000 शेयर्स। 8000 कैसे? क्यों? बिकॉज 8000 प्रॉफिट हुआ था, उतना तक ही मैक्सिमम डिस्काउंट में इशू कर सकता है। 9000 डिस्काउंट में नहीं कर सकता है। 8000 से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा में डिस्काउंट में और लॉस में इशू नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को थियोरिटिकल क्वेश्चंस आता है, तुम लोग को जब थ्योरी क्वेश्चंस आता है ध्यान से सुनेगा। ऑल क्वेश्चंस अभी प्रेजेंटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो प्रैक्टिकल साम अगर ठीक से सुन लेगा, समझ लेगा, उसका आंसर भी हमको देना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स रहता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अ कंपनी कैन रीइश्यू द शेयर्स। इन दैट केस इन दिस सम के लिए वी कैन से दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट जितना किया था फॉर फ्यूचर अकाउंट प्रॉफिट करके, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अ कंपनी कैन रीइश्यू द शेयर्स। दैट इज फॉर 1 मार्क थियोरिटिकल सम। 2 मार्क्स के लिए देता है कभी कभी सम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत जगह में क्या बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में ये सब दिस पॉइंट आता है हमेशा। तो इसका चेक हो गया। इसका बाद हम लोग करेंगे री इशू, द लास्ट पार्ट ऑफ द सम। री इशू का देखता है, रीइश्यू का क्या होता है, मतलब रीसेल कर रहा है। एंड दिस 1000 शेयर्स हैज एक्चुअली रीइश्यूड एट ए 10% डिस्काउंट। तो लेट्स डू द री इश्यू अमाउंट। इसका हम चेकिंग का काट देता है, चेक हो गया हम लोग को, तो इसका हम काट देता है। री इश्यू पार्ट, री इश्यू बेसिकली रीसेल। तो इश्यू का जर्नल एंट्रीज अगेन बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर क्यों डेबिट हुआ? वो जो 1 रुपया डिस्काउंट, इसलिए 1 रुपया लॉस हो गया कंपनी, तो कंपनी का 1 रुपया जो लॉस है वो प्रॉफिट से। तो रीइश्यू एंट्री, व्हाट इज रीइश्यू? तो रीइश्यू में क्या होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बैंक अकाउंट विल इंक्रीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट एट व्हाट प्राइस इट वाज रीइश्यूड? 1000 शेयर्स पूरा रीइश्यू हो गया एट 10% डिस्काउंट, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट, तो 10 माइनस 1 9 रुपया में रीइश्यू हुआ, तो 9, तो 9000 विल बी देयर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट, बिकॉज दिस इज डिस्काउंट में सेल हुआ था, डिस्काउंट मीन्स लॉस, तो दिस लॉस में सेल हुआ था, तो शेयर फॉरफीचर से डेबिट करके हम लोग को लेके पैसा लेके आना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी हैज ऑलरेडी 8000 रुपीज इन द फॉरफीचर अकाउंट। तो दिस 8000 रुपीज प्रॉफिट से 1000 रुपया लॉस के लिए मेकअप कर रहे हैं, इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना? 1000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगा, बिकॉज फुल्ली पेड है, तो कितना फेस वैल्यू? 1000 शेयर्स हाँ इंटू 10, ऑलवेज फेस वैल्यू। इसमें ऑलवेज फेस वैल्यू लिखेंगे, ऑलवेज फेस वैल्यू ओनली, फेस वैल्यू अप टू फाइनल कॉल 10, तो 10 ही लिखना पड़ेगा। इट इज दिस इज फुल्ली पेड, इसलिए पूरा फेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, फुल्ली पेड 10,000। ओके, तो बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आफ्टर द रीइश्यू, सिंस ऑल द शेयर्स हैज बीन रीइश्यूड, तो आफ्टर द रीइश्यू मेरा जो फॉरफीचर अकाउंट में कंपनी का जो 8000 रुपया बचा है, 8000 से 1000 रुपया हम लोग लॉस को मेकअप करने के लिए चला गया था, सो 8000 माइनस 1000, 7000 स्टिल कंपनी हैज अ प्रॉफिट। दिस 7000 ऑफ द प्रॉफिट has to be transferred to capital reserve, because this is one time profit of the company, so it has to be transferred to the capital reserve and it is called capital profit. तो जर्नल इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट था 8000, इसमें 1000 डेबिट हो गया, फॉरफीचर अकाउंट में 7000 है, तो since 7000 is remain in the forfeiture account, this amount fully transferred to capital reserve. तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 8000 फॉरफिचर अकाउंट में था, माइनस ये 1000 लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, 7000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दिस 1000 यहाँ पे माइनस करके, तो 7000 इज कैपिटल रिजर्व। दिस इज द सम, मोस्ट बेसिक सम्स। ओके, सो नेक्स्ट सम हम लोग करेंगे। हम लोग का सम यहाँ पे खत्म हो गया। जो फर्स्ट सम हम दिया था इसमें फॉरफिचर एंड रीइश्यू कवर किया। नेक्स्ट सम के लिए हम लोग कवर करेंगे 2 अवधि को फॉरफिचर कराएंगे 2 अलग अलग स्टेप में, एंड उसका भी रीइश्यू दिखाएंगे। ओके, इसका बाद कॉल्स इन एडवांस भी एक पार्ट यहाँ पे दे सकता है। लेट अस डू द नेक्स्ट सम। 2 आदमी फॉरफिचर हमको देना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट बाद हम लोग नेक्स्ट सम भी स्टार्ट करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।